Hi guys, welcome back to another video about Bitcoin. Bitcoin currently $102,225 carry करीब ट्रेड हो रहा है and like I said yesterday or 3 days ago as well, मैंने आपको बताया था कि Bitcoin is gonna be bullish even though market में pump and dump लाया जा रहा है, एक fear लेके आया जा रहा है, लेकिन that doesn't mean कि Bitcoin bullish नहीं है, it's gonna go up and it's gonna go up for sure, right? आज के scenarios और आज के जो technical analysis हैं, we gonna take a look at it. बट उससे पहले वी हैव टू लुक एट सम ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स ताकि आपको पता चल जाए कि मार्केट में पंप एंड डंप के सिनेरियो कैसे तरीके से बनाया जा रहा है और मार्केट का रिस्पांस और रिएक्शन किस तरीके से आएगा। सो वीडियो को लाजमी तौर पर एंड तक ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, सो गो हेड एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक न्यूज़ से। सो लाइक आई सेड यस्टरडे, ये वाली जो एफओएमसी की स्टेटमेंट, फेड की इंटरेस्ट रेट एंड एफओएमसी की उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल। ये जब तक हमारे पास एक बुलिश न्यूज़ नहीं दे देती है, विच आई पर्सनली, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है एंड आई कुड बी रॉन्ग, राइट? सो डोंट होल्ड मी फॉर दिस कि मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है, लेकिन द वे आई सी द मार्केट, ये वाली जो न्यूज़ है इट्स नॉट गोना बी ए ग्रेट न्यूज़, क्योंकि मार्केट में इंटरेस्ट रेट को होल्ड किया जाएगा और मार्केट में इंटरेस्ट रेट का स्टिल सेम सिनेरियो बनाया जाएगा कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट देयर वुड बी 2 इंटरेस्ट रेट कट इंस्टेड ऑफ 4 इंटरेस्ट रेट कट जो कि मार्केट एक्सपेक्ट करी है। लेकिन दैट मीन्स, हैविंग सेड दैट मीन्स कि मार्केट का रिएक्शन वर्सेस मार्केट का रिस्पॉन्स इज गोना बी टोटली डिफरेंट थिंग, राइट? मार्केट का रिस्पॉन्स वुड लाइकली बी अ बुलिश, which is something I'm going to show to you based on the things that I see is going to play out in the market, right? So response जो है वो sort of a bullish आएगा इसका, लेकिन eventually pump and dump करा जाएगा the way I see it personally. Like I said, ये मेरी personal opinion है. I hope this news is gonna be bullish or market is gonna go higher and higher or higher currently continuously non-stop बनाता रहे, which is something I'm hoping for. लेकिन my personal opinion is based on my understanding of the market. Market is very tough at the moment. बहुत सारी नेगेटिव सेंटिमेंट्स चल रहे हैं विच आर जेन्युइन ऑन द इकोनॉमिक साइड पे, एंड ट्रम्प की तरफ से एक क्लियर इंडिकेशन बिटकॉइन के रिजर्व एंड ऑल दोस थिंग्स, कोई हमारे पास अभी तक पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आई है। सो hold on to that, right? So I'm going to show you a couple of things before we're going to dive into BTC के टेक्निकल एनालिसिस। एक्सचेंज के इनफ्लो को देखते हैं। सो एक्सचेंज के नेट इनफ्लो को देखें तो एज यू कैन सी, राइट, सम ऑफ द मनी वेंट इन, मोस्ट ऑफ द बिग चंक वेंट इनटू बिटकॉइन एंड देन सॉल, एंड देन सम ऑफ द मनी वेंट इनटू वेव डॉट में एंड सम अदर स्मॉल कॉइन। इथेरियम में थोड़ी सी पैसे गए, which is why you saw some of the altcoins जो कि आज थोड़े से पंप हुए हैं comparatively, which is good news. उसके बाद XRP में some small chunk also went into the XRP as well. So this is something critical ताकि हम we follow the money, जहाँ पैसा जाए, अगर money is going into Ethereum, that means altcoin is gonna pump. So we should rather invest money into altcoins rather than investing into BTC. लेकिन BTC को देखना is very very critical क्योंकि BTC is the market maker. Important things that we need to look at is Bitcoin के return. अगर हम FAB के overall return देखें, right, after BTC having, so what happened is 2020 में BTC की having हुई, उसके बाद following जो month था in February, because end of January आ रहा, so there is no point talking about Jan at the moment. लेकिन the point I wanted to make it with you guys कि market में is gonna be bullish, right? So FAB जैसे ही having उसके बाद FAB was bullish, hit another month 2022, 2023, despite COVID, right? Or in 2024 as well, right? Which was a big pump. 25 is going to be bullish क्योंकि यहाँ पर 24 में having हुई थी. Similar thing अगर हम Ethereum पे देखें, right? So Ethereum was mainly, in fact, 2018 was only negative in February, which means altcoin are gonna pump like crazy, right? So altcoin pump करेंगे like crazy, which is a very very good news, and that's something we're gonna see later in the next couple of days. So week, 2 weeks most, we're gonna start seeing some crazy pumps into the altcoin. बिटकॉइन के क्वार्टरली रिटर्न की तरफ आते हैं तो 71% in 2023 in Q1, 2024 में 69% roughly, and so far 2025 में we saw roughly about 9.5%.
इथेरियम की बात करें तो सो फar has been negative, right? Q1 में, लेकिन it's going to turn into positive, hopefully, and that's something you're going to see for sure, inshallah. 2023 was positive, 2024 was positive, and 2025 is going to be a positive as well, right? बिटकॉइन की लिक्विडेशन की तरफ आते हैं तो करंटली मार्केट लॉन्ग को लिक्विडेट करने में बिजी है। 24 आवर टाइम फ्रेम की बेसिस पे वी कैन सी $227 million की लॉन्ग के लिक्विडेट हुए हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल व्हेन द मार्केट डंप दे ओपन अप अ शॉर्ट, दे थॉट मार्केट इज गोना गो डाउन फर्दर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मैंने टोल्ड यू many times over the past week and so Bitcoin was is bullish in fact on a long run, और exactly वैसे ही हुआ. So don't be one of those people जो कि आंख बंद करके शॉर्ट खोल दें. Follow my analysis, inshallah your trade is going to be 100% accurate. लिक्विडेशन हीट मैप की तरफ आते हैं. सो ऑन अ 3 days टाइम फ्रेम जब मार्केट यहाँ थी, आई टोल्ड यू मार्केट इज गोना गो अप, क्योंकि आई कैन सी लिक्विडिटी ऑन द टॉप एज वेल, व्हिच इज एग्जैक्टली व्हाट दिस गाय इज शोइंग, क्योंकि मार्केट में पंप एंड डंप सिनेरियो मेरे हिसाब से बन रहा है. आई कुड बी रॉन्ग, बट द मार्केट इज गोना गो अप इवेंचुअली, राइट? बेस्ड ऑन FOMC की मीटिंग की बेस पे मार्केट इज गोना गो अप. 1 वीक के टाइम फ्रेम में अगर हम लिक्विडिटी देखें, यू वुड नोटिस, राइट? सो ऑल द लिक्विडिटी जो मार्केट में पड़ी हुई है, इट इज़ ऑन दी हायर साइड, राइट? एंड BTC की अगर हम एनालिसिस करेंगे, which is something you're gonna see as well, right? So like I said, यहाँ पे another 140 $50 million, 160, 200, 300. So market में जितनी liquidity है, it's on the upside, it's not on the downside. Downside की तो सारी liquidity sweep हो चुकी है already, the big chunk, right? So we're gonna come back to the BTC and do a bit of a technical analysis. So yeah, coming back to the BTC, as you can see, BTC के price में already pump हो चुका है. It's not a huge pump, so we're gonna come back to 4 hours के time frame पे and we're gonna take a look at it. So अगर if you were to follow, right? So let's go to smaller time frame. So what do you see, right? So BTC ने एक low लगाया, लेकिन उसके बाद higher low and higher high form हो रहा है. So अगर मार्केट यहाँ से rebound होती है तो another higher high बन जाएगा, which means market is bullish, right? अगर हम rejection को देखें, right, based on what we see currently, मार्केट ने इस area से rejection ली. This was our rejection area, right? So मार्केट ने यहाँ से एक rejection ली और मार्केट इसी ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन ले रही है. मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ली, मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन ली, मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट देने की कोशिश की, यहाँ से एक ब्रेकआउट देने की कोशिश की, लेकिन सॉर्ट ऑफ ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन ली. और थोड़ा सा मैं इसको करेक्ट कर दूँ, सो या सो दिस इज द वे मार्केट इज गोइंग एट द मोमेंट, राइट? सो मार्केट उसी ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन ले रही है जो कि हमने अभी ड्रॉ की है. लेकिन लाइक आई सेड, राइट, हायर हाई ऑलरेडी फॉर्म हो चुका है. सो ये हमारा लो लगा, उसके बाद एक हायर हाई लगा, मार्केट इज कमिंग टू रीटेस्ट, और उसके बाद अनदर यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है, जिसकी चांसेस आर वेरी वेरी हाई. अगर हम अपने डाउन साइड की सपोर्ट को देखें, राइट, सो मार्केट ने डाउन साइड की जो सपोर्ट है हमारी इस सॉर्ट ऑफ हियर, राइट? सो मार्केट की ये बनती है हमारी सॉर्ट ऑफ अ रिजेक्शन एरिया, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन ली थी एंड मार्केट वेंट डाउन. सो सॉर्ट ऑफ अ सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है मार्केट में, लेकिन उसकी ब्रेकआउट देने के बजाय मार्केट टुक अ ब्रेक डाउन, और मार्केट में ये बनाया गया कि मार्केट इज बेयरिश इंस्टेड ऑफ बुलिश, जो कि मैंने आपको बताया था कि मार्केट फॉर अ शॉर्ट टर्म अगर हम ADX इंडिकेटर की तरफ से भी देखें, सो सी, राइट, इट वाज डाउन एंड इज गोइंग डाउन, राइट? मार्केट में डाउन था. दिस इज समथिंग आई शोड इट टू यू यस्टरडे एज वेल. सो मार्केट वेंट अप, जो कि मैंने आपको बताया था, एंड मार्केट इज स्लाइटली ओवर, लेकिन दिस इज गोना गो अप इवेंचुअली एंड पंप एंड डंप का सिनेरियो बनाया जाएगा. अगर हम RSI की बेस पे देखें, right? So based on the RSI, and I think this is the standard setting, this is not really my setting, so let me come back to RSI 7, and I'm gonna get rid of this guy, and I'm gonna, ताकि हमें मार्केट के करेक्ट मूव पता चल सके. सो एज यू कैन सी सेलिंग प्रेशर बना. दिस इज मोर क्लियर व्यू ऑफ द RSI rather than मार्केट के करेक्ट इनकरेक्ट मूव के.
अगर हम RSI को देखें तो RSI is currently around on a 4-hour time frame period basis पे around like 48, 49, right? So it's gonna go up eventually. RSI it went up to around like 53, 54. उसके बाद cool off हुई. लेकिन if you were to see right based on the RSI अगर हम यहाँ पे देखें तो RSI is making higher high as well, right? So market में higher high बन रहा है and यहाँ पे आके retest करेंगे and it's going to go up, right? Which is what I see. So yeah, so far based on RSI, based on higher high, the way market is making, the market is sort of bullish. और उसके बाद हमारा next area of resistance जो बनेगा, if everything plays out, हमारे पास बनेगा this guy जो कि हमारे पास already trend line की rejection बन रहा है currently. Then अगर हमें यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है फर्दर देन दिस इज गोना बी अ नेक्स्ट एरिया एज वेल जहाँ से हमें मोस्ट लाइकली रिजेक्शन मिलेगी. लेट मी मूव इट अप फॉर अ बिट. और उसके बाद इफ द मार्केट इज सीरियसली बुलिश, कोई मज़े की न्यूज़ आती है दैट वुड बी अमेजिंग. लेकिन दिस इज द वे इज गोना प्ले आउट. अगर डाउन साइड पे हम सपोर्ट का एरिया देखें तो हमारे पास सपोर्ट है इज दिस गाय 101,000 की हमारे पास सपोर्ट है. अगर लेट्स सपोज ये समहाउ ब्रेक भी हो जाती है, मार्केट कुड कम डाउन टू हियर, राइट? उसके बाद रीटेस्ट करके इट कुड गो अप. सो मैं क्या करूँगा, आई एम गोना वेट अप अंटिल FOMC की मीटिंग पे एंड आई एम नॉट गोना डू एनी ट्रेड. जैसे ही न्यूयॉर्क का सेशन स्टार्ट होता है, आई एम नॉट गोना डू एनीथिंग एट ऑल. और मैं कोई ट्रेड नहीं लूँगा. अगर डाउन साइड पे as long as we are holding this area, right, 97,000 in case of breakdown, which I highly doubt would happen. लेकिन मार्केट में लाइक से पंप एंड डंप का सिनेरियो क्रिएट किया जा रहा है क्योंकि द वे मार्केट में बताया जा रहा है कि भाई उसको ब्रेक डाउन मिल चुका है सिमेट्रिकल ट्राइंगल को और इस पैटर्न को हमारे. लेकिन मार्केट इज बुलिश. ट्रस्ट मी, ये एक फेक आउट है. मार्केट को एक FOMC की बेसिस पे सिर्फ दिखाया जा रहा है ताकि मोस्ट ऑफ द पीपल दे वुड ओपन अप शॉर्ट और वो लिक्विडेट हो सके. लेकिन मार्केट इज गोना बाउंस बैक एंड टॉप वाले एरियाज जो हैं दे आर इन प्ले. सो इफ आई वर यू, आई एम गोना वेट जब तक हमारे पास FOMC की मिनट नहीं आ जाते, मीटिंग नहीं आ जाती, उसकी बेसिस पे आई एम गोना टेक अ ट्रेड. अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, गो एड एंड हिट द सब्सक्राइब बटन.